आज लेक्चर असेल तर योगा टीचर असेल. मॅथ्स बाकी आहे. थंडी बसून ताप चढल्यासारखं झालं. धमक हे झाला, रिटायर झाला. ते रिटायर, हॅपी रिटायरमेंट दिवशी धवल. आज कपिल देवचा बर्थडे आहे. लेसन संपला. सीधा साधा ओ लभाला था ओ नादान
वापस से उसने भेजा भाई इस बार नहीं भेजा ना नहीं भेजा दिखा नहीं रहा भेजा आया आदित्य प्रजापति कौन है भाई इसको नहीं ये कौन है? अबे दुनिया में नहीं दिखी कुछ कांड कर रही थी गौरव के साथ पुरानी दीदी कौन है? नाम देख इसका नमू सामने भी पढ़ नमू बेटे उसको ये क्या बता रहा है नमू बेटे ये देखते हैं। अन्ना की सामने कौन है? ये Tomorrow you have math lecture. If you want to come, please inform me. If not, I will cancel the lecture. I will not go. Cancel कर दो टाइमिंग क्या है वो भी नहीं पता है cancel कर दो बोल के लेकिन क्या कौन है तनिष्का पटेल कौन है? पाटिल है वो, तनिष्का पाटिल? अच्छा। तनिष्का पाटिल अच्छी बड़ी बहन है। हाँ वो अरे वो एडवर्टाइजिंग बनानी थी वो एडमिशन की बहन थी वो बड़ी किसने क्या और उसको किसने इसको हाँ तो एक बार पूछ किया मैंने कुछ ये क्या है ये बंदे ने कुछ डाला है इलाज I can forget what I studied yesterday about this. It's a number. It's a number. ये वो वाला ये वो वाला हाँ बस अरे बाबर नहीं है वो फिर सो वो तो होगा जैसा लास्ट तक छोड़ेंगे हाँ कर सर्वज्ञा हाँ उसके दो बेटियां उसके दो बेटे हैं उसके दो बेटे हैं जय तू ये उसका बेटा है ना निशिका का तो ये दूसरा भगवान है ध्रुव है हाँ वो भी है सर्वर का लगा सर्वज्ञा ने तो हमारे अच्छे से एक अरे यार क्या करूं कौन था इंडिया इंटर मैड्रिड है ना मैड्रिड है ना नहीं इंग्लैंड वर्सेस नहीं मैन यूनाइटेड वर्सेस ओ रोहित शर्मा गुड टू बी बैक होम इसकी बर्थडे पे है ना बर्थडे की डांस प्रैक्टिस मेरे दिमाग में कोई लिस्ट करता है जो कॉपी करने का ट्राई करता है ये जिया पे आप कॉपी क्या करते हो और रोनाल्डो सर सर ओली टेस्टी दिया चेरुंडा मैं तेरे को कुछ सिखाना मुझे यही आता है मुझे यही आता है मेरे को कुछ सिखाना है स्टोर पे नहीं है मेरे साली बस अरे इससे बेटर तो ब्रदर है देखो ब्रदर है
channel बोला So are we good to go? Hey, listen, now what I have seen, there are some flaws and there are certain good things also. One, when you are walking up, right from walking till where you are facing, your body language has to be 100% confident. Second, when you are presenting yourself, always you should have that courage to look into the audience eyes. Don't shy it. Because I was a person who never thought I'll become a strong public speaker. You understand what is a public speaker? Yes, sir. Now I can address these students, even audiences of 350 at one go. 350 at one go, which have already done. And go. Ek hi saath. that many students. Not here. And then it was not small students, it were BMS final year students. College gave me only 1 hour of time, but I've spoken with them 3 hours. Not spoken, it was my lecture, they paid me for that. But then, what it is your confidence, how you speak up. I have taken BMS lecture without preparing because when I started my lecture some 9-8 years for BMS, that was very new for me. The lady who I am replacing, she was 15 years of teaching in the same college, same subject. And within 2 weeks, the children told me, sir, you are teaching and her teaching, there is a lot of gap. You understood? Positive side from my side. But then I cannot take it on my head. But whenever that madam used to call me, तू छोटा है रे, कभी ये भी नहीं कहूँगा, तुझे क्या आता है, मैं गाइड करूँगी. पर बच्चों ने किसी लड़की ने बोल दिया, क्या तो पढ़ा था, मैं प्रोफेसर ने मस्त पढ़ा था, तो उसको थोड़ा सा झटका बैठ गया. सर कौन सी यूनिवर्सिटी? 2, 3, not here. One was here only, second was in Bombay. सर अभी कहाँ पे पढ़ा था? अभी बताता हूँ ना. So it is not my way, it is your way of coming here. Don't shy away, don't bite your nails, don't even run away. And आपका eyes and your language. Second, the way you are standing and way you are delivering is very important. Correct that? So let us proceed the chapter. And last 15 minutes, what is his name? He will do it. Understood? And judges have to be like judges, not comedians. And Discussing and they are laughing. wait, that is correct only. You know that this guy is going to these two topics. You have to be ready with your questions. Like when I was sitting with the Miss Mumbai in one of the university, I was judging a ramp walk where I have zero experience. I judged, and I was discussing with that Miss Mumbai. So मेरा पूरा colleagues because she was wearing this one. अभी Miss Mumbai तो ऐसे ही रहेगी बड़ा सोफा. सर फिर क्या चलो लगे कुछ पूछना था. वही क्या सर? She took my number once or twice. We had a call also. अभी मैं पता नहीं कहाँ है. She wanted to do economics further, not India. So what I was doing, तो मैंने बोला भी अरे क्या मुझे ड्यूटी छोड़ दिया बैठना. उस दिन वो जज आया नहीं था, उसके जगह पर मुझे बिठा दिया. And very confidently I had done the ramp walking also. सोचो मैं कितना शर्माया. सर आपने? हाँ. Ending में करना पड़ता है ना जजेस को. तो ये मैडम बोले सर आप शर्मा मत सर मैं लेके जाऊँगी. अभी मैं I made that girl walk twice. सर क्या सर आपको इतना नहीं आता. बोला मैडम I'm an economics teacher. तो मैं है ना सर मैं नहीं. And we hold up the hand and we walk there. She turned in a very fashionable way. मैं तो turn नहीं मैं normal क्या. सर ये है. And it was video recorded. It was तो मैंने तो सोचा सही आंसर. चल रहा था नहीं बहुत अच्छा चल रहा था. उसका पेट में आग लगा था मुझे चांस क्यों नहीं मिला. Here in my university, there's a old lady. She has been already Miss Asia twice. तो अभी भी मैं फेयरवेल ऑर्गेनाइज करूँगा. तो my boys and girls are very charming type. तो मैंने बोला आओ मैडम. And the old lady very fair looking. मैं उसका फोटो भी दिखा था. तो उनका हाथ पकड़ के मैंने very fashionable सब लड़के लोग सर फिर लग रहे हैं सर मैंने हाँ तेरे जैसा. And then they started work. Understood? Chalo. Let's not get into some my details. तो types of rainfall notebook में लिखना है.
Types of rainfall. Dad and daughter calling me. Point number 1. Convectional rainfall. Either. I will give in one liner. Proper revision हो जाएगा. Convectional rainfall. Sir, do you have any idea about mock test? Here. हाँ definitely ना. अभी बताऊंगा क्या हो गया क्या चाहिए. Like it's a class we have to give mock test. What is it? You should mock the test, people. That is a mock test. नहीं मैं अभी बताता हूँ. लिखा? Yes. Mainly observed in equatorial region. Mainly observed in equatorial region. With steady increase in temperature and rapid heating. This is that lady. She now works under me. मतलब मेरे से डिपार्टमेंट में नहीं है. किरण राजपूत. ठीक है? She told me she was Miss Asia during her time. Sir, बहुत दूर है सही थी. हाँ तो नजदीक उसके गोद पे. राजपूत है. Oh. तो मेरा already कोई था क्या? नहीं, why I am showing because देखो there is nothing that you should say ये मेरा feel नहीं है. At least try तो करो. But उसको मुझे सब आता है. मतलब तुझे कुछ नहीं आता. So she taught me, sir, this is the way the boy has to walk, turn 1.5, and ज़्यादा भी turn नहीं होने का लगे. अभी लड़के की तरह तो मैं तो टुमके नहीं लगा सकता, but मैं तो सीधा ही चला हूँ, है ना? So why it is called as catwalk? मतलब मैं भूल गया. चलो अभी पढ़ो. Very smart, क्यों? इसमें ना डॉग के साथ. Okay. फिर आगे वाला जनरेशन कैसा निकलेगा? डॉग और कैट मिलके ये मैं सुन नहीं सकता. Very bad combination. चलो. Steady rise in temperature, rapid heating, creating convectional currents. Creating convectional currents. Full stop. Now you go for relief rainfall. She was presenting. Also known as orographic rainfall. Correct है ना? Yeah. सर बिल्कुल सर. किसके लिए? पीछे नहीं. किसके पीछे? सर वापस बोलो. नहीं मैं नहीं जाता वापस. एक बार हो गया तो भागा था. सर इधर देखो. हाँ मुझे भी सुना. मैंने सर ये मन की बात था. मन को बोलो जरा धीरे बात करने के लिए आवाज ही आता है. चलो नाइस वन. हो गया. क्या? orographic rainfall since. हाँ वो भी अभी ये भी ऐड होगा उसमें. Since it is the windward and leeward. It is the windward and leeward. Side of a given mountain. Responsible for such rainfall. Actually, windward leeward say नहीं, mountain है, फिर उसका windward leeward. Okay, responsible for this rainfall. Next. Hey, did I bring my that pouch that? आया तो था. अच्छा उधर ही होता है. किसका तो wallet गिरा है उधर निकल तेरा. तेरा ही है तो. तेरा है. अपना पिछवाड़ा को भी नहीं संभाल सकते फिर क्या संभाले. मतलब इतना हल्का लग रहा है और मालूम भी नहीं. उठा के पहले बैग में डाल. बैग में डालना माय डियर. एक ही चला. वो डर गया. अरे भाई ढूंढना नहीं ये
जेन्युइन नहीं रहा आर्यन अपने तो क्या है, और किसी का उठा के तू डालेगा मेरे जैसे क्योंकि मैं आजकल वॉलेट ही नहीं लाता आई ब्रिंग ओनली द कार्ड्स ओनली कैशलेस हाँ कैशलेस सर नहीं ऑनलाइन पेमेंट अच्छा ठीक मैं वो कैशलेस बोला है अरे Sir, thank you, sir, very, very much. यू आर मोस्ट वेलकम सर एसी का टेंपरेचर बहुत ही ज्यादा है ठीक है नेक्स्ट यू राइट साइक्लोनिक और ए क्विक यार कम करते हैं हाँ वही साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल cyclonic or frontal it is not frontal frontal where is that remote मैं बोलता हूँ शरद को एसी का रिमोट दे दो frontal rainfall cyclonic disturbances then shall I switch it off? No. Decrease temperature. अच्छा मुझे लगा disturb हो गया 22. 2 and 2 2 and 2 क्या 220 sorry तो थोड़ा एक मिनट I sometimes feel I should not talk to you guys करेले का जामू हाँ उधर से फोन आ रहा है मेरे मम्मी के लिए मैंने ऑर्डर किया था चलो साइक्लोनिक हो गया so write down side down so it is the cyclonic so it is the warm and cold air what did I what is, please read that
Cyclonic disturbance, it is the warm and cold. Yeah. Air, warm and cold air confronting with each other. Leading to the cyclonic rainfall. I will draw this diagram for convectional, this diagram for relief. इधर लिखो windward side, इधर लिखो leeward side, है ना? And for this you write cyclonic. 753. Leave you. किधर है मेरी क्लास? वो बोल. इधर वो शिव मंदिर के पास. कितना बचेगा? वो भी बोल. 750 को 750 को डालो. ये लेक्चर खत्म होने वाली है. हाँ ठीक है. Which lecture it सर is? मैं भी इसके साथ ओए. हाँ सर वो भी है. हाँ ठीक है. तुझे भी भेजा. ये नहीं हुआ है। वो आता था ना. मैं अच्छा लग रहा अरे छोड़ देना. खुद नहीं बोल रहा है. You be with us boy. है ना? है। डॉग भी बर्थडे था। हाँ. Very good. हाँ. फोटो कर. सर यही मेरा सर मैं भी ये बोल रहा था घर पे मम्मी बोली कि चुपचाप उधर भी जा. नहीं माँ का बात मत कर. ठीक है जाकर. That is English classes. Yeah. She is going to check some work, so she said. मेरा तुम्हारा एक सीरियस में एक एक लड़का आइडिया है. है सर हाँ बोलिए. मैंने लिखा है वो बुक दे देता हूँ मैं जल्दी बैठा हाँ कुछ लिखित है ना. बोल मैंने वेरी गुड। तू चला जा। हाँ देखिए देख छोड़ It's up to you. I'm not going to give it. मगर मैं अकेले भी आती ना तो भी मैं आपके लेक्चर के लिए बैठती क्यों भाई? क्यों भाई? इससे क्या सैक्रिफाइस है? बहुत कुछ है। ये एक भी चीज बता. ये ऐसे बोल बोल के भागता है. और बता. ओए बंडू, where's your wallet? एक कर. चेक नहीं करो. अबे बाहर लोग क्या पिक पकड़ है क्या? सर अब उसका हिसाब से. इस चेक का से वेरी क्विकली. सर नहीं सर मार्क्स. हाँ चलो. Now let us go with the marks now. सर सर, ये सर जज कर सर टोपोग्राफी सर सर I'll do it for you. मैं जज के साथ बैठ मारने की क्वेश्चन किया नहीं सर नहीं सर फिर बताओ ना सर इधर कुछ नहीं होता हाँ? किधर करेगा? अच्छा मैं आगे चलता हूँ. व्हाट Hey, judges, be quiet now. कन्वेक्शन ये भाई देखो ना जरा बोल जजेस को डाला रहे हाँ. बोल convectional rainfall occurs mainly in equatorial region. They are heated under अरे मैंने कहा क्या You be quiet. वो अपने पतलून खुद ही उतारेगा. And he's understanding. पतलून उतारना मतलब समझता है. Girl has to shut her eyes. पतलून is this. अरे बोल ना ठीक है चड्डी खींचना. हाँ. वो शुद्ध हिंदी में बोल रहा है. हाँ. So the equatorial region of in the convectional rainfall occurs in the equatorial region. In the equatorial region, heat meets the air and rise currents of hot and humid air and causes. क्या कर रहे हैं? पेज रन कर रहा हूँ अरे wait. And causes condensation of the clouds, which It causes is condensation. condensation of the clouds, which causes that convectional rainfall, and it occurs in the 4 o'clock. So it is called in the It equatorial. occurs in the 4 o'clock. What kind of English is that? It occurs at the time of 4 o'clock. So it is also called as 4 o'clock shower. And They are seriously looking at you. Huh? and it so called and क्या हुआ हमारे यहाँ पे एक शोक सभा होने वाला है. and it उधर जाके तुझे मुर्दे के बाजू में बैठा है. जो बेचारा मुर्दा टेंशन में उठ के तुझे जो झापड़ नहीं मारा. मैं इधर मर गया हूँ और तुझे हंसी आ रही है. and it gets and the equatorial region gets more than 200 centimeter of the annual Cats. Gets. Okay, my dear judges. how frequent is the rainfall in the equatorial region at 4 o'clock. अरे how Daily. At 4 o'clock. 4:30 को बंद. What is the annual rainfall at the equatorial region? Annual.
200 से अभी तो बोला भाई 200 अभी 200 तो अलग इतना है इजी पूछेगा इसका easy था हो गया ना सर दो अरे वो बोलेंगे ना शायद हो गया hey guys ask him दो क्वेश्चन हो गया नहीं ठीक है what is he is ready you ask him 10 also he is not a person to be running away from the stage सर बहुत टाइम लगा सर नहीं रुकना है वही का उसका उसके हंसी के लिए तो और 5 से पूछना है what happens after the air heats rapidly what happens after that it happens that it causes condensation of the clouds and causes convection थोड़ा और क्या हंसते हैं and causes convection and rainfall by the condensation of the clouds because the air heats and rises the what is this religious but how do they rise in what pattern rise is very ability इतना भी मत होता है it's a hard question था how it rises तुम लोग क्या can we हाँ चलो आजा अरे yeah you sit you give me only the सर उल्टा जाते हैं सर स्टार्टिंग से नहीं आएगी हाँ इधर से आएगा अच्छा पहला तेरा हाँ sit down हाँ नहीं पहले उसका नहीं हाँ ठीक है 1.5 oh my goodness miserly सर दो आना करे बोल अरे ठीक है don't challenge the judge here 2.5 two. right? 2 and the girl has done better than that boy okay 4.5 hey bro you're my bro चल पापा वॉलेट में कितना पैसा निकल गया देखो what they have done ना he was explaining in between of his stupid laughs that is different but he was knowing the concept देखो whenever you go for any interview or anything they will ask you the questions which you do not know लिखवा के ले तो उसके लिए आप क्या बोले मतलब है ना एंड साला इसको ये क्वेश्चन पूछना था ये पूछना था अभी देर लाइक यस सर वेरी गुड क्वेश्चंस बट सॉरी सर आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर है ना देन जितना स्वीटली बोलेगा सामने वाला बोलेगा इतना मैं उसका कचरा कर रहा हूं फिर भी वो कचरा नहीं ले बट इफ यू बिहेव इन अ वे देन यू आर दे दे पानी उधर दे तो उसे क्यों मांग रहे ले ऑफिस वाला पानी है पूरा डाल then you drink it fully it's also sorry I was not knowing was a request कर रहा था बच्चे को ज्यादा पानी चाहिए hey guys चलो हाँ why 1.5 explain to me although I feel he is the star performer of my अच्छा मत रहे he gave the answers correct but he didn't have that confidence of explaining those answers and his explanation was not that appropriate that हाँ simple confidence improve sir एक और रुक जा ये भी पूछेंगे why 2.5 year for my dearest students she got one question wrong if she have gotten both of the questions right then 4 one question wrong and one question she didn't answer is it so and her explanation was very short means it didn't cover all the points oh very good why give 4.5 to him because he was even not though he that was laughing confident even though he was laughing his explanation was good and his concept was also clear very good but she got more time to prepare हाँ maybe that इसलिए तो हाथ मार काटा है तो फिर वाला बहुत से लिए काटा है वो तो क्या फिर ना 5 out of 5 देगा हम जो करते हैं इनको ठीक है this chapter is done completed now what I am going to do we will go directly into the map or directly into that pollution chapter which one you want me to do map okay now UT volume everyone is having I'll get some volume how many volumes are not there how many volumes are not there 2 we both will share put that third fourth row volume there please get it and she has one this for her nothing now they will be doing map in that you also will be doing now to come to page number 252 there is तीन ही बोल के अभी दोबारा आएगा देखो कुछ नहीं and before to that also we have good deal of maps we have map in this one we have page number in textbook also you have so 190 but क्या है ना volume has given some practice maps 240 234 sit down नहीं लगते ऐसे बोले
हाँ ठीक है मेरा वाला दे दूँगा बैठो and textbook also. Now look here. Now unlike your 8th standard, I don't know what it is. I've never taught. Unlike your 10th, which I've been teaching, this is a world map. So you have to be very very sure all the continents. Okay. Yesterday in one of the branch, yesterday he was saying South America because it is southern hemisphere, that is South America. ये भी नॉर्थ अमेरिका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है. दिस इज सेंट्रल साउथ अमेरिका. अभी ये पूरा यूनाइटेड स्टेट्स है. करेक्ट. नाउ दिस इज अफ्रीका, दिस इज एशिया, मिडिल ईस्ट एंड दिस इज आवर कंट्री इंडिया. एंड ये सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, दिस इज ग्रेट ऑस्ट्रेलिया. करेक्ट. Now when I'm going to teach you, you have to, in exam if they have not given, try to catch that 0 degree line and try to see कौन सा कॉन्टिनेंट से कट होते जा रहा है. इट इज इक्वेटर. इसका मार्किंग है 23.5 डिग्री टू द नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. 23.5 डिग्री टू द साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. पहला वो भरो. राइट लेफ्ट हैंड साइड में लिखो 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ. चलो एवरीवन, इवन इन द टेक्स्ट बुक. हाँ तो साइड में लिखो. हाँ तो जिसमें नहीं है उसमें लिखो. देखो सब बाकी सब में लिखा है. नहीं तो लिखना जरा यार इसको सिखा सर नहीं सर उसी में लिखता हूँ. खुद ही आंसर भी दे रहे. और क्यों सजेस्ट में जगह है. I really like the way you have explained why 1.5, why 2.5. That shows your maturity. देखो maturity मतलब where you are able to replace a person who is 45 years old right in front of you, and you have given him such a knowledge, he will scratch his head although only few hairs are left on his head. है ना? That is maturity. Maturity doesn't mean going into certain PORL and seeing in the actions of your teacher or your mother or father. That is rubbish. Maturity means you can kick a person ASS with your answer. है ना? बोले. चलो. Right. There was a poem, or I don't know. I used to teach this English to IB level, ना? सर आप ALSH बोले. मैं F वाला भी बोलूँगा, but इतना नहीं बच्चे के बोलूँगा. अरे there is one Guruji in India who has told the people to repeat this F wala word so many times to release all the pressure. F also. Release the pressure, and he has proven in the records कि बार-बार बोलने से आपका कितना टेंशन बाहर आता है. तो कितने सारे स्टूडेंट को मैंने कुछ चिल्ला के बोला है ना, जब बाहर जाते से हम बोल के जाते हैं, बोला शी इज नहीं करता बोल गई सर. ये तो फिर भी ठीक है. When she was talking to her friend, वो तो MB इतना यूज कर रही थी बाबा, और लड़के लोग सुन रहे हैं. M3 छोड़ना शॉर्ट फॉर्म ही बोल रहे हो. तो फिर जैसे कि फुल फॉर्म सर आपको अरेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं. नहीं अरेस्ट बाप ऑफ बाप. हमारे स्टाफ में लड़का है, वो जब भी बोलता है ना हंसी आती है. वो मानस करके करता है. सर लाइन से सब एक साथ सब बोलेगा. चलो अभी मैप में आते हैं. इक्वेटर चलो guys, I have to teach you. I'll be showing you video display of the map also. In fact, छोड़ दे यार.
Continents for kids. You're about to embark on an amazing journey about giant land masses that make up our home planet. I'm not talking about neighborhoods, cities, towns, states, or even countries. I'm talking about continents. Continents are giant land masses separated by seas or oceans that make up all the land on our planet. Every piece of land on Earth is part of a continent, and there are 7 of them. You may already know you live on the continent known as North America. 7 of them. You may already know that if you live in the United States or Canada or Mexico, you live on the continent known as North America. North America is bordered by the Atlantic Ocean on the east and the Pacific Ocean on the west. See that red dot? That dot sits right in the United States, which also happens to be right in the middle of North America. Now see the dot? What country is that? That's right, Canada. Canada is also part of North America and lies directly north of the United States. Where's the dot now? Smack dab in the middle of Mexico, which is also part of North America. The Rocky Mountains, the Great Lakes, parts of the Arctic, the Caribbean countries, the Everglades of Florida, and the redwood forests of California are all part of North America. North America is a big continent, coming in at about 9.5 million square miles. It's home to almost 600 million people, and it's made up of 23 countries, including the US, Canada, Mexico, a bunch of Central American countries like Costa Rica, Panama, and Guatemala, and the Caribbean islands. But guess what? While it's big, it's only the 3rd largest continent in the world. So, what are the continents of the world? And what does it mean to be a continent? In all, there are 7 continents on Earth. A continent does not have a mayor
There are 7 continents on Earth. A continent does not have a mayor or a king or a president. In fact, nobody runs continents. Continents are made up of countries, and those individual countries have leaders. People, animals, landscapes, houses, rivers, lakes, mountains, and basically everything on Earth that you can find on land. There's no piece of land on the planet that isn't part of some continent. So check it out. These are the 7 continents, numbered 1 to 7. We already told you about North America.